टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों मटेरियल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग तैयार करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि द मटेरियल वाइडली यूज फॉर मेकिंग पेंडुलम्स ऑफ क्लॉक इज। कौन सा मटेरियल होता है दोस्तों बताना आपको। स्टेनलेस स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील होता है, या हीट रेजिस्टिंग स्टील होता है, या निकल स्टील होता है। द मटेरियल वाइडली यूज फॉर मेकिंग पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज। द राइट आंसर इज 101 का राइट आंसर है दोस्तों, दैट इज योर डी। दैट मीन्स निकल स्टील। निकल स्टील का हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग पेंडुलम ऑफ क्लॉक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। इन अ हाई स्पीड स्टील मैग्नीज इज यूज टू टुगेदर द मेटल एंड टू इंक्रीज इट्स। इन हाई स्पीड स्टील की बात की जा रही है जिसमें अगर मैग्नीज का हम लोग यूज करते हैं टू टुगेदर द मेटल टू एंड टू इंक्रीज इट्स, क्या होगा? यील्ड पॉइंट, critical temperature, melting point या hardness. The right answer is 102 का right answer, that is B, that is critical temperature. In high speed steel, manganese is used to tougher the metal and to increase in its critical temperature. Next question 103 का, that is here. The steel widely used for making precision measuring instrument is. Steel वाइडली यूज फॉर मेकिंग प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज, कौन सा होता है वो? निकल स्टील होता है। कौन सा होगा? निकल स्टील। क्वेश्चन 104। द स्मॉल परसेंटेज ऑफ बोरॉन इज एडेड टू द स्टील इन ऑर्डर टू। स्मॉल परसेंटेज ऑफ बोरॉन इज एडेड टू द स्टील इन ऑर्डर टू, क्या करता है? इंक्रीज हार्डनेबिलिटी, रिड्यूस मशीनेबिलिटी, इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, या इंक्रीज एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। राइट आंसर दैट इज योर 104 का ए, that is increase hardenability. Small percentage of boron is added to the steel in order to increase hardenability को बढ़ाता है। 105. Which of the following material has nearly zero coefficient of expansion? आपको बताना है कि which of the following material has a nearly zero coefficient of expansion? Stainless steel, high speed steel, invar या heat resisting steel? What is the right answer is? That is 105 का C. That means invar. Which of the following material has nearly zero coefficient of expansion? That is your invar. Question 106. Chromium when added to the steel dash the tensile strength, क्या होता है क्रोमियम को ऐड करने पर? does not affect yet decrease या increase. What is the right answer is 106 का 6, that is C, यानी increases। अगर क्रोमियम को हम ऐड कर रहे हैं स्टील में तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी वो increases। वेनेडियम व्हेन एडेड टू द स्टील, जब वेनेडियम को हम वेनेडियम को ऐड कर रहे हैं टू द स्टील में तो क्या हो रहा है? इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ या डिक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, या रेडियस क्रिटिकल टेम्परेचर या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बताना है। व्हाट इज द राइट आंसर इज 107 का ए, दैट इज इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्रोमियम को ऐड कर रहे हैं तो भी इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड वेनेडियम व्हेन एडेड टू द स्टील दैट इज आल्सो इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 108। टंगस्टन when added to the steel dash the critical temperature। जब टंगस्टन को एडेड करें टू द स्टील क्या होगा? डज नॉट इफेक्ट लोअर या राइजेस द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्या होगा राइट आंसर 108 का, दैट इज सी, दैट मींस राइजेस। टंगस्टन when added to the steel rises the critical temperature। Question number 109। the machinability of steel is improved by adding। the machinability of steel is improved by adding, क्या? निकल, क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम, सल्फर, लेड एंड फास्फोरस। मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इज इम्प्रूव्ड बाय एडिंग, क्या राइट आंसर? दैट इज 109 का डी, दैट मींस सल्फर, लेड एंड फास्फोरस। द मशीनेबिलिटी ऑफ अ स्टील इज इम्प्रूव्ड बाय एडिंग सल्फर, लेड एंड फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 110। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द स्टील कॉजेस, क्या होता है? reduce neutron absorption cross sections, improve weldability, embrittlement and corrosion resistance। What is the right answer is 110 का राइट आंसर हो जाएगा C, that is your embrittlement। presence of hydrogen in steel causes embrittlement। क्वेश्चन में 111 क्या क्या है? corrosion resistance of steel is increased by adding nickel and chromium। agree या disagree? What is the right answer is 1 का, that is A, that is statement is agree, यानी
corrosion resistance of steel is increased by the adding nickel and chromium. Question number 112, that is hardness of a steel is increased by adding sulfur, lead and phosphorus. Yes या no? What is the right answer is 112 का B, that is no. Shock resistance of steel is increased by adding. शॉक रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करना है स्टील में तो क्या हम ऐड करेंगे निकल या क्रोमियम या सी निकल एंड क्रोमियम या सल्फर लेड एंड फास्फोरस. क्या राइट आंसर इसका? दैट इज सी. निकल एंड क्रोमियम को ऐड करने पर इसका शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील का इंक्रीज होता है. क्वेश्चन नंबर 114, द स्टील्स वाइडली यूज्ड फॉर मोटर कार क्रैंकशाफ्ट इज निकल स्टील, क्रोम स्टील, निकल क्रोमियम स्टील या सिलिकॉन स्टील. बट द राइट आंसर इज 114 का B, that is your chrome steel. The steel widely used for motor car crankshaft is chrome steel. Question number 115, the silicon steel is widely used for, किसके लिए यूज किया जा रहा है? Connecting rods, cutting tools, generators and transformers in the form of laminated cores and motor car crankshaft. What is the right answer is 115 का C, that is your generators and transformers in the form of laminated cores. The silicon steel is widely used for generators and transformers in the form of laminated cores. Next, 116, the cutting tools are made from, किसके बने होते हैं? निकल स्टील का, क्रोम स्टील का, निकल क्रोम स्टील का या हाई स्पीड स्टील का. That is your 116 का D, that is high speed steel. The cutting tools are made from high speed steel. Question number 117, which of the following gives the correct order to increase the hot hardness of cutting tools? क्या होगा? A, B, C, D में कौन सा सही आंसर होगा? वो बताना है कि which of the following gives the correct order of increasing the hot hardness of cutting tools of materials. That is right answer is 117 का C. That means पहले होगा आपका हाई स्पीड स्टील, फिर कार्बाइड और फिर डायमंड. हाई स्पीड स्टील, carbide and diamonds. Next 118, killed steels क्या होगा? बताना आपको कि heavy minimum impurity level are produced by LD process, have almost 0% of phosphorus and sulfur and are free from oxygen. What is the right answer is 118 का D, that is are free from oxygen. Killed steels, that means are free from oxygen. Question 119, an alloy steel which is work hardenable and which is used to make the blades of bulldozers, buckets, wheel excavators and other earth moving equipments contain iron, carbon and. अब बताना है क्या एडिशन होगा इसमें? An alloy steel which is work hardenable and which is used to make the blades of bulldozers, buckets, wheel excavators and other earth moving equipment containing iron, carbon and. Right answer is 119 का C, that is your manganese. Iron, carbon and manganese. Next question 120, connecting rod is usually made from, किसका बना होता है? लो कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का या मीडियम कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील. What is the right answer is connecting rod is basically use होता है 126 का C, that means medium carbon steel. Connecting rod is usually made from medium carbon steel. Question 121, the alloying element which can be replaced tungsten in high speed steel is, the alloying element which can be replaced tungsten in high speed steel is, क्या होगा इसका राइट आंसर? the alloying elements which can be the alloying elements which can be replaced tungsten in high speed steel is 121 का right answer, that is your D, that means molybdenum. The alloying element which can replace the tungsten in high speed steel is molybdenum. 122, free cutting steel is, contains carbon in the free form, requires minimum cutting force, is used where rapid machining is the prime requirement या can be cut freely. What is the right answer is 122 का C, that is your is used, free cutting steel is used where rapid machining is the prime requirement. Next question, ball bearing are usually made from, ball bearing are usually made from किससे बनी होती है? लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या क्रोम स्टील.
What is the right answer is 123 का D. That is your chrome steel. Ball bearing are usually made from chrome steel. Question number 94. Shock resisting steel should have, क्या होता है उसके अंदर? शॉक रेजिस्टिंग स्टील्स के अंदर लो वी रेजिस्टेंस होता है, लो हार्डनेस होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टफनेस होता है. और इज राइट आंसर इज 124 का डी. दैट इज योर टफनेस. शॉक रेजिस्टिंग स्टील should have a toughness. Question number 25. The alloy mainly used for corrosion resistance in stainless steel is, the alloy mainly used for corrosion resistance in stainless steel is, कितना क्या होगा? सिलिकॉन, मैग्नीज, कार्बन या क्रोमियम? What is the right answer is, that is 125 का D. That is chromium. The alloy mainly used for corrosion resistance is stainless steel is chromium. Question 126. The nuts and the bolts are made from silicon steel. Right or wrong? That is 126 का B. That is wrong. That is wrong. Question 127. The alloying element which reduce the formation of sulfur sulfide, the alloying elements which reduce the formation of iron sulfide in steel is, क्या होगा? क्रोमियम, निकेल, वेनेडियम and मैग्नीज. That is your 127 का D. That is manganese. The alloying element which reduce the formation of iron sulfide in steel is manganese. 128. The alloying element which increase residual magnetism and coercive magnetic force in steel for magnet is, the blade of power saw is made of, किसका बना होता है? High speed steel. The blade of a power saw is made of high speed steel. और the main alloying elements high speed steel in order to increasing corrosion are the vanadium, chromium and tungsten. 129 का, that is 129 का A. That is vanadium, chromium, tungsten, and blade of power saw is made of high speed steel. Question 131. In high speed steel, vanadium adds to the property of red hardness and tungsten and chromium add to the high wear resistance. The statement is true or false? That is 131 का A. That is true. Question 132. The high speed steel has dash the percentage of tungsten, maximum या minimum? That is your 132 का A. That means that is maximum. The high speed steel has maximum percentage of tungsten. 133. 1841 high speed steel contains, 1841 high speed steel contains, क्या होगा percentage? That is 133 का, that is B. 133 का B. That is a vanadium 1%, chromium 4% and tungsten 18%. 1841 का मतलब हुआ, 1841 का मतलब हुआ vanadium 1%, chromium 4% and tungsten 18%. टंगस्टन का परसेंटेज हो गया 18, क्रोमियम का परसेंटेज हो गया 4 and vanadium 1%. 134. A steel containing 12 to 14% chromium and 0.2 to 0.3% carbon is called martinistic stainless steel. True या false बताना है? That is 134 का, that is your हो गया A. That is true. Steel containing 12 to 14% chromium and 0.1 to 0.35% carbon is called martinistic stainless steel. True. 135. A steel containing 16 to 18% nickel and about 0.12% carbon is called, क्या कहलाता है? फेरिस्टिक स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील और निकल स्टील. व्हाट इज द राइट आंसर? 135 का A. दैट इज योर फेरिटिक स्टेनलेस स्टील. Question 136. The austenitic stainless steel contains, the austenitic stainless steel contains, your right answer is, that is 136 का A. That is 18% chromium and 8% nickel. 137. The type of steel is group A and group B. Type of steel and product. मैच कॉलम करना है BDAC. That is mild steel. That is your commercial beams. B. फिर that is your D. That means tool steel, planking dies. फिर PT, फिर A और C. That is medium carbon steel, screwdriver and high carbon steel, that is crane hook. तो
mild steel, commercial beams, tool steel, planking dies, medium carbon steel, screwdrivers, and high carbon steel, commercial beams. क्वेश्चन 138 18 by 8 स्टेनलेस स्टील कंसिस्ट ऑफ क्या शो करता है ये हमें बताना 18 by 8 138 का क्या राइट आंसर है 138 का बी दैट इज योर 18% chromium and 8% nickel. Question 139 the material in which the atoms has arranged chaotically is called क्या होगा amorphous material, mesomorphous material, crystalline material and none of these. What is the right answer is 139 का A, that is amorphous material. Question 140 the material in which the atoms are arranged regularly in the some direction but not in the others is called क्या होगा right answer 140 का B, that is your mesomorphous material. Question 141 in crystalline material atoms are arranged in definite and ordered mannerly from हम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री. क्वेश्चन 141 का that is your A, that is agree for statement. Which of the following is an amorphous material? That is glass is the amorphous material. Which of the following is a mesomorphous material? क्या होगा राइट आंसर इसका 143 का A, that is your mica. Which of the following is a mesomorphous material? That is mica. The unit cell आपको बताना है यूनिट सेल ए बी सी डी में क्या होगा स्टेटमेंट कौन सा 144 का that is D, यानी all of these, यानी in the unit cell contain the smallest number of atoms which when taken together have the all properties of the crystalline of the perpendicular metals, have the same orientation and their similar faces as parallel, may be defined as the smallest parallelepipeds which could be transposed in 3 coordinate direction to build up the space lattice. That is all of the above. Question 145 in unit cell of the body centered cubic space lattice there are the atoms कितने होंगे BCC में बताना आपको. body centers cubic में 145 का B, that is your 9. In unit cell of a body centered cubic space lattice system there are the 9 atoms. Question 146 there are the 14 atoms in a unit cell of क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस को या फेस सेंटर्ड को या क्लोज पैक हेक्सागोनल स्पेस लैटिस या नन ऑफ दीज. व्हाट इज राइट आंसर इज 146 का दैट इज बी, दैट मींस face centered cubic space lattice have a 14 atoms in the unit cell. 147 in a unit cell of a closed packed hexagonal lattice space lattice there are the 24 atoms. तो वह क्या इंडिकेट कर रहा है दैट क्लोज पैक के लिए राइट या रॉन्ग है. That is 147 का B, that is wrong. That is wrong. यानी in a unit cell of a closed packed hexagonal space lattice there are the 24 atoms. Wrong. Question 148 in a face centered cubic space lattice there are क्या होगा statement 148 का that is a B, that is 14 atoms out of which 8 atoms are located at the corners of the cube and the 6 atoms at the center of the 6 faces. Question 149 in a body centered cubic space lattice there are the 9 atoms out of which 8 atoms are located at the corners of the cube and 1 atom at the center. One statement yes or no, that is 149 का A, that is your yes. 150 in a closed packed hexagonal space lattice there are in a closed packed hexagonal space lattice there are what is the right answer is that is your 150 ka D, that is none of the above. Thanks for watching and sharing. Goodbye.